Hello, hi guys. Hello to all our viewers. So, would like to start with saying that this was a very sad week indeed, with two really big cricketers passing away, especially Shane Warne. All of us were shell shocked. I remember I was traveling, I was roaming around, and all of a sudden I see this news. I went into a shock for like 5 minutes just to absorb what really happened. People are still coming to terms with it. He was an absolute legend, king, genius, what do I want to call him? One of the biggest legends of the game, someone, and like Shikhar said in the tribute video, someone who has inspired an entire generation and made test cricket or cricket in general very cool. Yeah, what would you like to say? What Shane Yeah, wanted to think? very shocking. Like I still remember when Australia toured India in 2001. Like he was the only cricketer I wanted to meet, and even though he would have taken only 100 wickets, I would have still remembered him because like he was such a character, like such an entertainer, and such an amazing leader that we saw when he coached, captained and coached RR. So He has done amazing things. To win an IPL with that team, those young players, yeah, that's commendable Yeah, in itself. I mean, he's one of those characters who has done everything on a cricket field. Like everything, yeah, literally everything has been done by him. He has won everything. He has won Ashes. He has been the man of the series in Ashes. He has been man of the match in the World Cup final. He has been, you know, possibly everything that a leg spinner can do has been done by him. He has bowled yeah. magic delivery. He was such a character. He was a He was crowd only puller. I 22 mean, when he bowled that delivery. Yeah, amazing. and if you see the way he had his personality, like people are placing beer cans Beer in cans and OTC now. cigarettes. The famous VB area. And he was a type of a personality. He was not an ideal role model kind of a person, but someone you can relate to and someone you can identify with. And he was a very real and really upfront kind of a person. Very genuine person. Yeah. And even with that kind of a personality, he got the respect of the entire cricketing world, including his opponents, his teammates. So that is one thing. And of course 90s kids ka to we can never, I mean, that bowling action we tried to emulate so many times, and Adam Gilchrist saying bowling Shane after Yeah. that will always be etched in my mind. Yeah, man. Like that was like, yeah, the way other team, country players are talking about him speaks volume about this man. Yeah, it's simply brilliant. And And it like seems the he way he was used a to very good. predict things, like the cricketing brain he had. Like you remember, like he predicted how Brendan McCullum will play a shot and get Yeah, out. Like some we of discussed the that things in which he did was the just tribute. magic. Yeah, Yeah, I discussed that in the tribute video. Like he had a very good cricketing brain, but mostly he was such a good friend to everyone. Like, yeah, Michael Clark, he was one of the best friends of Michael Clark. The way, Michael Vaughan actually went to Ashes do commentary on Ashes last summer, and he was all alone. And he spent his summer in the Shane Vaughan house. So he had that, pull of the people, and he had a controversial life, and that's what Glenn McGrath actually said a very good thing. A lot of people live for 100 years and they don't have a life like Shane Warne. That was the yeah, best tribute I feel yeah. Glenn McGrath paid to him. Megan say like So even if people can have 20 lives but can't live like Shane did. So that was, yeah. yeah, And I also like how Virat Kohli said a few words about Shane Warne before day two's play. Like that was very well said. Like Virat also said some really good things. yeah. Yeah. So guys, moving on from it has been a very sad week, but Still, yeah, cricket has still pretty continued, and shocked. Still pretty shocked. yeah, it has been Yeah. really shocking, and especially he was so much loved and across the world. It's still I'm still yet to get over it actually, and it has still not sunk in. Maybe in the next week, but cricket has moved on, and I think we have had 2 days of test match cricket in India and in Pakistan. So before that, guys, I just want to mention that ICC Women's World Cup is also going on, and India is playing Pakistan today.
And in the New Zealand, in beautiful ground of New Zealand, this match is going on, and India were 114 for 5 today. Sorry, 114 for 6. Yeah. Yeah, 114 for 6, and from there they got to 244, and it was the highest 7th wicket partnership in Women's World Cup, and also the highest 7th wicket partnership for India in any tournament. Any tournament. So that was Pooja Vastrakar played a beautiful knock with Sneh Rana. So I just want to mention that before we start discussing men's cricket. And the result, the match is still ongoing, so we are hoping for an India win on that. Yeah. Yesterday also we saw an epic 7th wicket partnership between Jadeja and Ashwin. So another beautiful 7th wicket partnership. Yeah, and I wanted to say that even here in the Women's World Cup, India's never lost to Pakistan in the 50-over World Cup, at least. I hope the record stays intact. Yeah. Yes. And like Shikhar said, another great thing about the partnership was like when they were 114 for 6, already 33 overs had been bowled. So from Yes. that, crossing 240 odd was a great effort. And hopefully our And- bowlers will finish the job. And actually, between 21st over and 34th over, only 18 runs were scored. Some in 14 overs, because Mithali Raj actually played a very bad knock. 9 runs of maybe the 36 pressure balls. maybe the pressure got to her, India Pakistan game. I don't know. I think she was trying Super to slow. play out the bowlers or something, because 6 overs mein 9 runs, so they only scored 18 runs in 14 overs, and from there to reach 244 is just an amazing feat. So all credit to Pooja Vastrakar. But the And World she's Cup is making very his World Cup interesting. debut. The last over of dot in, and then I saw that catch from the Aussie bowler. Like that match was also very close between England and Australia. That catch is becoming very famous on social media. Like that clip, amazing catch. Yeah, one hand. And we saw a stumping from Australian wicketkeeper Alyssa Healy, and the delivery was bowled by Alana King, who is also a leg spinner, and it was written "Stump Healy bowled King" in a tribute to Shane Warne, because Shane Warne is known as the King. So that was a tribute, and it was a beautiful leg spinner, just like And the Shane Warne similarity used of those distances, uncanny, like unbelievable. So refreshing to watch. Yeah, something like that. Yeah, guys. Coming back to Also the coming Australia-Pakistan Test series, I think it must be hard for the Australian players right now, because of Shane Warne's thing. Like they must have been, and also they bowled like 160 odd overs. Like must be such a hard day for them yesterday. Yeah, there was nothing at all in the pitch, so I felt very bad for them. Like they were just bowling. But yeah, you can't do much on these pitches. I mean, Azhar Ali was set and he scored a big knock. Yeah. Probably Pakistan should have not played safe here. I think now I predict it's going to be a draw. If Australia can also hold on to this kind of, they can also do, at least I don't want Australia to lose 20 wickets. I think that will be a very bad thing for Australian cricket if they lose 20 wickets on this pitch. I mean, they're coming on a high from Ashes win. So, I think they will bat well. I don't think Pakistan bat like brilliantly, because even after playing so many overs, their run rate was still under 3. So, I mean, that was they should have Australia made ne 550. Batting for 2 days, at least they should have made 550. No, Australia bowled well. Australia ne achhi bowling kiya, and especially if you see the stats of bowling figures of Josh Hazelwood, he has bowled some 20 overs and given 30 runs. Yeah. And if you see, Pat Cummins also has been very economical and also picked the wicket. So they made sure that Pakistan never got a chance to accelerate until the very last 3-4 overs. That's only when Pakistan actually accelerated. So that was good bowling from Australian team. Yeah, and I want to highlight how good Hazelwood has become now in all 3 formats. He's performing really, really well. I think he's the best bowler now, Josh Hazelwood, across all formats. Yeah, that's a good point, because he's good at T20 bowling. Yeah. बट मुझे समझ नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्वेप्सन का ऐसा क्या काट रही है. मतलब यार एससीजी में उसको डेब्यू देने वाले थे, एंड वहां से यार अभी भी तुम सेकंड स्पिनर को नहीं खिला रहे हो. तुम्हारे पास विकेट टेकिंग ऑप्शन ही नहीं है. मतलब नेथन लायन इज एन ऑफ स्पिनर. स्टार्क की जगह खिलाना चाहिए था उसको. स्टार्क की जगह डेफिनेटली खिलाना चाहिए था.
or maybe they wanted to go with इनसे भी pace. बहुत ओवर्स कराए, लबुशेन और हेड, इन सबसे ओवर्स कराए जा रहे थे, तो वो तो सबने सेकंड स्पिनर खिलाते तो थे। हाँ ब्रेक देने के लिए, बट हाँ एक यार आई थिंक यहाँ पे सेकंड स्पिनर बनता था, बिल्कुल था। मे बी क्रिस ग्रीन को नहीं खिलाते, यू श्रीलंका डोंट ने भी नीड सेकंड स्पिनर नहीं हाँ खिलाया। एग्जैक्टली, क्रिस ग्रीन क्यों खेल रहा है भाई? क्रिस हाँ। ग्रीन क्यों खेल रहा है यहाँ पे? हाँ, मतलब ग्रीन यहाँ पे नहीं कैमरन खेल रहा ग्रीन, है। सॉरी आई मीन कैमरन कैमरन, ग्रीन सॉरी क्यों हाँ खेल रहा है? कैमरन ग्रीन। मैं सोचा क्रिस कौन है। और श्रीलंका ने भी नहीं खिलाया भाई सेकंड स्पिनर। श्रीलंका के तो पास धनंजय डिसिल्वा है ना, एटलीस्ट वो है, मतलब वो तो कर लेगा, ठीक एटलीस्ट है। हाँ, he's a good all-rounder. But हाँ, man, yeah, एंड वो Pakistan, I असलंका mean, भी डाल Australian, रहा I है। think all, I mean, it's still early to say, but Australian, I think almost they made sure कि Pakistan will also not win this test, because अभी पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया 300 भी बना दे तो पाकिस्तान will have to bat again, and then again the time will be lost. So mostly Australia And should there be is safe rain here. predicted, and there is Oh. rain predicted on the last day, so that also is a factor. When all three of us predicted the scoreline for this series, we forgot that थोड़े draws हो सकते हैं, especially if you remember जब इंडिया last time पाकिस्तान में टूर गई थी, तब भी ऐसे फर्स्ट इनिंग्स में दोनों टीम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं ये? नहीं, पर तब भी क्या draw गई हुए थी थे। पाकिस्तान? Yeah, but in नहीं, general, पाकिस्तान the way test हाँ, cricket has become now, अब results हमेशा आते हैं, ठीक है? It's very rare not to get a result now. तो it is disappointing. यार ऐसी पिच क्यों बनानी है टेस्ट क्रिकेट में? No, I'm not happy with that. But I'm very thankful to पाकिस्तान में Australia. ऐसे पिचेस रहते हैं। Pakistan, पाकिस्तान because- में याद है वो मार्क टेलर ने भी 334 कुछ तो मार दिया था, तो ये पाकिस्तान में ऐसे ही। एंड पाकिस्तान में ठीक है अभी, और ऑस्ट्रेलिया का भी एक है कि ऑस्ट्रेलिया हैज नॉट प्लेड एन अवे सीरीज सिंस लास्ट 3 इयर्स, तो उनको अभी पता नहीं है कि क्या करना है। मतलब कि वो लोग 3 साल से जो टीम अवे सीरीज नहीं खेली है, वो सडनली सब कॉन्टिनेंट के टूर में जा रही है अगेंस्ट अ वेरी गुड पाकिस्तान टीम, एंड दे आल्सो लुक वेरी आउट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, बट आई But थिंक I'm थिंग्स very विल surprised you picked Australia favorites for this series, even though like 2017 में they Yeah, tied that with was surprising. Bangladesh. Yeah, they tied with Bangladesh, and you are predicting them to beat Pakistan. So, on paper I believe ki because Hassan Ali and Fahim Ashraf both were not there, that's why, and I think both the spinners are very new to international cricket. They are very experienced in domestic cricket, but I think I thought ki Pakistan will struggle to take 20 wickets, but actually Australia struggled to take even 3 wickets, so that was the basis for my prediction. And I thought कि Australia have a better bowling attack and also a better batting lineup. That's why I predicted Australia. I was thinking 3-0, but अगर यार अब ये series ही जीत जाए तो at least my prediction will come true, because you both have predicted Pakistan to win the series. yeah, but let's see. Hopefully, थोड़े spicy pitches आएंगे आगे. I mean, ये मैच तो थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है. But again, और एक रीजन मैं बताता हूँ, जस्ट एक मिनट, और एक रीजन मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया प्रेडिक्ट किया, क्योंकि भाई ये लोग ना सोशल मीडिया पे काफी मोटिवेटेड थे। अगर तू फर्स्ट टेस्ट के पहले, मतलब फर्स्ट डे के पहले इनका पोस्ट देखेगा, वी आर रेडी, पैट कमिंस, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, वेरी एक्साइटेड, रेडी टू गो। मतलब भाई ये लोग का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे था, and they were quite motivated to play this test match, but things did not go their way. Matlab last 2 days have been but I'm very thankful poor to advertisement Australia, for and test. especially thankful to Pat Cummins. He's such a great leader. पूरे टीम को लेके गया. I mean, this is great. Seriously, I mean, England को हमने बैकआउट करते देखा, न्यूजीलैंड को बैकआउट करते देखा. They are doing a great service to the world cricket. And ये लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं कि ये लोग WTC फाइनल इस बार पहुंचे, because last time they missed because of point, some decimal they missed out. वो टिम पेन का रिव्यू और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो ओवररेट का कुछ उनको लग गया था, तो this time they are quite determined to make it to the World Test Championship final, and there is a chance also because India and New Zealand are slipping. New Zealand already इस बार होम सीरीज जीत ही नहीं है, बांग्लादेश से भी ड्रॉ, साउथ अफ्रीका से भी ड्रॉ। न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड का बहुत मुश्किल हो गया है. India will still have a chance. South Africa is very good. They are doing really well. South Africa is the best team now. Currently, I think the best team is South Africa right now. And then इस सीरीज के बाद we'll know कि पाकिस्तान and Australia में से कौन who will be like. Did you see that Rasi van der Dusen का post जो उसने डाला Instagram पे? वो देखा किसी ने? नहीं, न्यूजीलैंड टीम के साथ ना, that was so good. नहीं, उसने डाला है कि उसने एक बहुत लंबा पोस्ट लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि लास्ट 3 months में there have been 2 times media totally counted us out against India when we were 1-0 down. Everyone said India is going to win their
India is yeah. going to win their first series in South Africa, and we beat them 2-1. And when New Zealand were 1-0 up, everyone said New Zealand is going to win the first ever series against Yeah. South Africa, home or Against away. South Africa. And then we Yeah. did not let them win the series. So that is the achievement of this team, I think. Which is very well said. And I think they have two easy series to go now. अभी ये दोनों उनके tough series already हो गए और अभी हाँ. South Africa कुछ easy series होने वाले हैं तो yeah, I mean I hope South Africa reaches that But यार final. ये न्यूजीलैंड 2 टेस्ट सीरीज क्यों खेलती है? मतलब इनको पता है भाई केन विलियमसन के बिना इन लोग नहीं उखड़ पाएंगे, तो ये लोग 2 टेस्ट नहीं सीरीज बट उसमें उनका दोष नहीं है ना, दूसरे बोर्ड्स उनको देते नहीं है, ऐसा मैंने सुना है. दूसरे बोर्ड्स नहीं देते. That's odd. Yeah. Okay. ओके Like कुछ तो एक सीन बार होगा. मुझे याद है वर्ल्ड टेस्ट जीतने के बाद उनके किसी प्लेयर ने बोला था कि हमें सिर्फ 13 मैचेस मिले 6 सीरीज के अक्रॉस. But ठीक है. Anyways, but now it feels someone senior, maybe Ross Taylor था जो बोल रहा था कि we deserve more matches in the series. Ross Taylor. But coming to India Sri Lanka test match, guys, first of all, Bhai, what a let's start tribute with to the Shane. let's start with the unwanted unnecessary created controversy जो बोल रहे हैं कि राहुल द्रविड़ ने फिर से किसी को 200 करने से रोका. नहीं वो काफी क्रिटिसाइज हो रहा है, एंड आई थिंक इट इज राइट. मतलब यार क्यों उसको 200 नहीं बनाने दिया? इट इज स्टिल मतलब कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है. I heard today morning कि जडेजा ने खुद बोला रोहित शर्मा को कि पिच में there is something in the pitch for the spinners, so might as well make them bat now. To maybe Jadeja himself recommended this in the press conference, or this was just maybe this is a rumor, but this is what I'm hearing now. ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा. But this is what I'm hearing. But हाँ, we'll get to know in a couple of days. But my first reaction was कि they are unnecessarily creating a fuss about it. 175 it was still far from 200. But when I found out कि team में 25 minutes बचे थे, so then it doesn't make any sense for him not to give that chance. But they wanted to decide some time to let Sri Lanka play as well, right? So ठीक है जो भी, लेकिन they had a lot of time. One day from this test, India is still very much favorites to. Yeah, match कल खत्म हो जाएगा ठीक है पहले. So exactly. So, I mean, he bats at number 7. He already broke the world record for the highest score batting at number 7. Not world record, right? India का record. India के लिए, sorry. Yeah. India के लिए, not world record. So yeah, it would have been nice if he could have gotten 200. Like, yeah. So no, I will say this कि देखो, first of all, Jadeja paid a perfect fucking tribute to Shane Warne because he was his rock star and उसने भाई सेंचुरी मार दिया. ठीक है, उसका मेंटर रहा शेन वॉर्न थ्रू आउट राजस्थान रॉयल. एंड व्हाट एन इनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज. मतलब कि जडेजा का जो नॉर्मल इनिंग्स होता है, ही कम्स मतलब कि जब इंडिया ऑलरेडी 400 पे होती है नॉर्मली जब होम कंडीशंस में खेलते हैं, जैसे उसका फर्स्ट सेंचुरी था वो ऑलरेडी 500 पहुंच चुके थे इंडिया. कोहली ने सेंचुरी मार दिया था. Yeah, 2 batsmen already had. But this time it wasn't that easy. मतलब he came at a very early stage itself, and after that the way he batted till 50 runs, and after that the way he accelerated, मतलब वो last session of batting जो उसने दिखाया, मतलब कि his game has gone to another level, and it is time we start recognizing Ravindra Jadeja as one of the legends of Indian cricket, you know, because he's been playing since last 12-13 years. उससे भी ज्यादा हो गया आई थिंक वो खेल रहा है. एंड टेस्ट क्रिकेट में आई थिंक उसका एक डेकेड अभी पूरा होने वाला है जडेजा का. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग हिम एज अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट. एंड अश्विन और जडेजा का पार्टनरशिप, एंड उसके पहले पंत ने ऑलरेडी मैच वाज टेकन अवे बाय पंत. another 90 score, and another तो शायद रिकॉर्ड हो गया. Fifth dismissal in the 90s, and now he's third after Sachin and Dravid. Yeah, अगर ये 90s के स्कोर आधे भी कन्वर्ट हो जाते तो he would have beaten Dhoni by the number of centuries already. धोनी के 6 या 7 टेस्ट सेंचुरीज हैं, तो he would have already been ahead. वो बीट कर देगा, उसमें कोई वो नहीं है. बट इसका तो बहुत टाइम है. हाँ वो तो बीट हो जाएगा. बट द थिंग इज the way he launched an attack after he got a 50, मतलब he was 12 of some 30 balls. He started very slow. He was 12 of 30 balls, and then he got to his 15 some 80 balls, and after that he launched a, मतलब वो 16 बॉल में 96 पहुंच गया. That was amazing batting. I mean the way he was smashing Embuldenia, वो जो sixes मारे उसने, जो गांगुली का भी वही एरिया होता था, याद है लॉन्ग ऑन वाला, वहां पे सिक्सेस जो दिए हैं भाई. it was amazing man. एम्बुल्डेनिया को 6 सिक्सेस दिए, 6-7 सिक्सेस दिए आई थिंक. एंड उसके बाद धनंजय डिसिल्वा ने डीप में सारे फील्ड सेट कर दिए हैं, फिर भी वो
1-handed मारा है उसको भी, बट यार वो By the way, बहुत the ही artist also played really good drives, man. Artist ने भी बहुत अच्छे drives. भाई आर्टिस्ट तो Ashwin is इंडिया a proper batsman. में तो वो हीरो है भाई, इंडिया में उससे तो Hey, our viewers must be thinking, who is the artist? No, the artist is Ravichandran Ashwin. He's the sophisticated artist who plays a lot of beautiful, drives and all. क्योंकि वो artist है, but वही साउथ अफ्रीका में जब वो आर्टिस्ट्री दिखाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि there is no Slip need पे of जाते हैं doing उसका वो. artist. Instead of a drive, वो slip में catch जाता है, simple. But nevertheless, a very good partnership between both, Pant and Jadeja, and then Ashwin and Jadeja also. And last में तो उमेश यादव के शामी के साथ भी, शामी साले BKL शामी, I want to say. पंत के साथ जब साउथ अफ्रीका में डिफेंस करना था तब तो तू साले छक्के चौके मार रहा था, वहां पे अपने आप को बहुत बड़ा हिटर समझ रहा था, और यहाँ पे साले डिफेंस कर रहे हैं और स्ट्राइक, जडेजा इज फार्मिंग द स्ट्राइक. मतलब भाई क्या चल रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्या चल रहा है यार, ये चीज साउथ अफ्रीका में तुमसे किया नहीं जा रहा था. वो जब पंत तुम्हारे साथ बैटिंग कर रहा था, not Shami का, like I'm like, Yeah, he has changed all of a sudden. इसने ऐसा कभी नहीं खेला, मतलब फर्स्ट टाइम इसने ऐसा खेला होगा मुझे लगता है. फर्स्ट टाइम मुझे लगता है ever. केप टाउन के बाद इनको बहुत बुरा वाला वो मिला है, बम्बू टाइप कुछ तो मिला है भाई, शामी और Man, वो बहुत बुमराह को, disappointed जैसे था, वो वो लोग. सीरीज अपना होना था यार, like seriously. आई थिंक वो मिला है इनको थोड़ा, इसकी वजह से अभी वर्ल्ड टेस्ट जैसे ये लोग- चैंपियनशिप में फाइनल पहुंचना भी रिस्की हो गया है. प्लस तू सही बोला भाई, we missed Jadeja in the South Africa series. We actually missed him. Like you said that. He's easily India's second best batsman, maybe after Pant and Rohit, or third best batsman. So, क्योंकि now there is no Kohli, Pujara, Rahane. These three are out now. I mean, Kohli is still there in the team, but he's not in the best batsman, among the best batsmen of the team. So I think now Jadeja is that, and maybe Jadeja को इनको यार विहारी को नंबर 3 पे खिलाने की जगह, I think इनको जडेजा को ट्राई करना चाहिए टॉप ऑर्डर में. I mean, nothing Yeah, man, I wrong was in thinking that. the same. That can be an interesting idea, लेकिन Because especially last 2-3 साल से जडेजा अपने जब इनिंग स्टार्ट करता है ना, तो he plays very like tentatively खेलता है थोड़ा. I mean very maturely, not tentatively. I should use very maturely. He tried to build his innings. And हाँ, उसने नहीं, बोला वो- भी था recently कि ऑस्ट्रेलिया टूर के टाइम पे जब कि I'm very happy, मेरे को एक्चुअली टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना था, ऐसा बोला था वो जब उसको कोहली की जगह एक मैच में लिया था. तो बट उसका मेन रीजन आई थिंक वो क्यों लोअर ऑर्डर में, मुझे लगता है क्योंकि वो टेल के साथ काफी अच्छा बैटिंग करता है. मैंने उसे 2-3 बार देखा है. एक बार इंग्लैंड में, मतलब अवे में, जब आई थिंक 56 उसने मारा था अभी रिसेंटली, तो टेल के साथ काफी अच्छा वो उसका अंडरस्टैंडिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, डबल्स ले लेता है वो, तो स्ट्राइक पे कभी कभी वो आ जाता है वापस. I mean, उसके थोड़े धोनी जैसे स्किल्स तो है बैटिंग में, लाइक वनडे में भी फिनिशर है वो धोनी की तरह, तो वैसे ही अभी भी कि टेल के साथ अच्छा बैट करता है, जैसे धोनी यूज्ड टू डू. but now that number 3 is empty, maybe he can play there. I mean, we are still like Vihari made 58, so that was not a bad innings. And Vihari played Vihari, a good innings. अच्छी बात ये था कि he did not go into his shell. He was playing his shots, so it was actually a good innings. एंड ठीक है, देखते हैं. अभी तो न्यू लाइनअप है. श्रीलंकन टीम के बारे में कुछ कमेंट्स. आई मीन क्या बोलेंगे यार, इतनी वाहियात बॉलिंग Well, कभी नहीं देखी मैंने. Well, Sri Lanka का record है, right? They never won a test match in India. That record is going to stay for a few years. Yeah. नहीं, विश्वा फर्नांडो ने थोड़ा अच्छा बॉलिंग किया बीच बीच में, एंड सुरंगा लकमल वाज आल्सो ओके, बट या स्पिनर्स वेर इनिशियल पीरियड में एम्बुल्देनी अच्छा था, बट ही वाज डिसअपॉइंटिंग. और ऑब्वियसली इनको एक और स्पिनर खिलाना चाहिए था, वो जय विक्रमा को आई थिंक इनको खिलाना चाहिए था ये मैच. वो उन्होंने मिस्टेक किया उसको. इन्होंने असलंका एक एक्स्ट्रा बैट्समैन सोचा खिला लेंगे असलंका, और उससे बॉलिंग करवाएंगे, तो भाई सब कुछ नहीं मिलेगा इनको इंडिया में. मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं, हम असलंका से बॉलिंग करा लेंगे, वो विकेट भी ले लेगा, रन भी मार देगा, ऐसा थोड़ी होता है. बट ठीक है, निशंका इज आई थिंक बैटिंग नाउ, सो निशंका. बुमराह bowled really well, man. Indian pitches पे फास्ट बॉलर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आई हैव टू से बुमराह इज bowling really well. And it is Bumrah's only third test at home. Jadeja took two more wickets. He has a 5er now as well in this test match. Jadeja is killing it. Jadeja is, like I'm saying right now, Jadeja is better than Stokes, because Stokes का थोड़ा dip हुआ है form, and yeah. Oh wait, अच्छा follow on के बाद follow on भी हो गया. maybe
जडेजा एंड स्टोक्स का कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो या इट्स एन इंटरेस्टिंग कंपैरिजन नो डाउट, बट स्टोक्स इज अ नंबर 4 बैटर, तो वी हैव टू रिमेंबर दैट कि मतलब स्टोक्स प्लेज इन मोर हाई प्रेशर सिचुएशंस एंड he has won lot of games like from his own alone, single handedly from single handedly really tense games. Tense games. Yeah. South Africa में उसने एक मैच जीता है. I mean, Jadeja that has was won amazing. a lot of games for India in probably in limited overs. So yeah, अभी टेस्ट में yeah. नहीं, टेस्ट में वो बॉलिंग से तो जिताता ही है, बट हाँ विद द बैट मतलब कि with the bat I think he has to win it more than, you know. But again, man, last 4-5 years में he has played many important knocks, so he's getting there. Like he's becoming that player who can win match from the. I think उसका लास्ट 2 years में उसका एवरेज कुछ 70 कुछ है, 60 या 70 है उसका एवरेज लास्ट 2 years में. That is an amazing. Basically showing Kohli how to play Embulldenia. कोहली का तो टाइम हो गया. नहीं वो तो लेफ्टी है यार, को जडेजा तो लेफ्टी है, बट कोहली तो यार इतना शॉक क्यों हो जाता है मतलब आउट होके, मुझे समझ नहीं आता. मतलब वो ऐसे क्या हो जाता है कि दुनिया ही पूरा गिर गया उसके ऊपर. वो प्रेडिक्शन वाला कमेंट एपिक था भाई, वो प्रेडिक्शन वाला कमेंट एपिक था, लाइक दैट रियली मेड माय डे. भाई बहुत प्रेडिक्टेबल हो गया है एक्चुअली. कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि हाँ वो आएगा और 2-3 कवर ड्राइव खेलेगा और उसके बाद आई वाज लाइक फक यार, काश मैंने लिखा होता. आई वाज लिटरली लाइक दैट व्हेन आई रेड दैट. यार पता है मोइन अली से भी वो एक बार बोल्ड हुआ था तो ऐसे ही एकदम रिएक्शन दिया था कि ऐसे कितना टर्न हो गया बॉल, ओ माय गॉड. और आदिल रशीद एक बार वनडे में थोड़ा सुन रहा था, ही वाज सेइंग कि थोड़ा मेंटल हो चुका है, ऑलमोस्ट उसका मेंटल ब्लॉक हो गया है कि यू नो लेग स्पिनर भले लेफ्ट आर्म है राइट आर्म, थोड़ा सा कुछ तो है, लाइक आउट ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा आउट हो रहा है. आई थिंक ही आल्सो नीड्स अ ब्रेक, यू नो एक्सटेंडेड maybe break from the. क्या होता बता रहा था कि अभी मोहाली में प्रैक्टिस के टाइम ही जस्ट बिफोर द टेस्ट मैच एक चंडीगढ़ के लोकल बॉलर ने उसको 2 बार बोल्ड किया, लेग स्पिनर, वेरी यंग किड. डेफिनेटली लेग स्पिन इज अ वीकनेस. आउटसाइड ऑफ वीकनेस है उसका. हाँ वो मतलब आउटसाइड इंडिया. यार थोड़ा नेथन लायन ने भी उसको बहुत ट्रबल किया है वैसे तो. मतलब ही इज नॉट एक्चुअली, वो स्वीप नहीं करता ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट अ स्वीपर ऑफ द बॉल, तो इसीलिए पीपल आर नॉट अफ्रेड टू यू नो पिच द बॉल अप टू हिम मे बी. या बाय द वे एक वो कौन सा चैनल है जहाँ पे एडम कॉलिंस ने नया खोला है, यू नो दे टॉक अबाउट क्रिकेट पॉडकास्ट समथिंग लाइक दैट. तो उसमें वो लोग बात कर रहे थे कि जैसे कोहली का थोड़ा लीन पैच चल रहा है, वैसे दे बिलीव स्मिथ का भी थोड़ा लीन पैच, दो स्मिथ हैज नॉट प्लेड मेनी मैचेस. तो वो यही बोल रहे हैं स्मिथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होगी है पाकिस्तान वाली, यू नो दैट विल डिटरमाइन हाउ लॉन्ग स्मिथ विल प्ले टेस्ट क्रिकेट. नहीं आई थिंक बाबर का थोड़ा लीन फेस चल रहा है. बाबर ने 2019 से सेंचुरी नहीं मारा है, ही हैज नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी, तो बाबर का भी थोड़ा चल रहा है. सीरियसली बाबर का तो टेस्ट सेंचुरी नहीं मारा है बाबर ने. 2019 onwards there has been no test century by बाबर. ओके. तो क्योंकि फवादी तो जिता रहे, रिजवान और फवादी तो जिता रहे सारे मैचेस, उनको कहां बाबर जिता है कुछ मैच मुझे याद तो नहीं है. बाबर के 50s तो मैं देखता रहता हूं, वेस्ट इंडीज में भी 50 मारा था. 50s मारे उसने, 50s 70s ये सब तो मारे हैं, बट 100s नहीं मारे उसने. 50s तो कोहली भी अपना मार ही रहा है थोड़ा बहुत, 45 48 वो तो मार लेता है. चलो बट ठीक है गाइस. नेक्स्ट मैच कहां पर है इंडिया का? नेक्स्ट मैच बैंगलोर, इन माय सिटी. बैंगलोर में मैं जाऊंगा देखने पक्का. वेटिंग फॉर टिकट्स टू स्टार्ट. टिकट तो मिल ही जाएगी टेस्ट मैच की, बट आई एम गुड. रोहित शर्मा कैप्टन बन गया है तो कुणाल जाएगा देखने इंडिया के टेस्ट मैचेस. बाय द वे रोहित शर्मा बहुत अच्छा कैप्टनसी कर रहा है बाय द वे, मतलब फील्ड सेटिंग्स एंड बॉलिंग चेंजेस काफी. बुमराह को मैंने देखा नहीं कि किसी ने इतना यूज किया जितना वो यूज कर रहा है, मतलब तो कैप्टनसी हैज बीन गुड. Yeah, but I'm missing that कोहली का you know टेस्ट मैच एग्रेशन जो रहता है. कल बुमराह ने जब विकेट लिया था तो कोहली आया था बीच में, उसको ऐसे ऐसे करके यस तू ही है वो जो विकेट लेगा. लेकिन बुमराह ने जो नो बॉल डाला, मैं बहुत मूड ऑफ हुआ यार. क्या बॉलिंग बॉल बुमराह ने 10 बार कर दिया. वो तो होता रहता भाई. वो छोड़, आज सुबह भाई श्रेयस अय्यर ने इतना इजी क्या ड्रॉप किया, मतलब कि बस ऐसे था और वो ऐसे बस उसने ड्रॉप कर दिया. एंड अश्विन उसको ऐसे देख रहा था. टॉप 8 में श्रेयस अय्यर ने सबसे कम स्कोर बनाया, वो उसी के बारे में सोच रहा होगा कि इस पिच पे मैंने कैसे मिस आउट कर दिया. नहीं ठीक है, अभी तो
he is new and उसको मिलेगा अभी backing. By the Yeah. way, Pujara and Rahane are also. I mean, Rahane made 100 in Ranji, but apart from that, both are struggling. वहाँ पे सरफराज खान पागल हो गया है भाई, वो 100 पे 100 मारे जा रहे हैं. मुझे लग रहा है सरफराज खान आ जाएगा इंडियन स्क्वाड में. मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है कि वो आ जाएगा इंडियन स्क्वाड में. I mean, अब विराट कैप्टन नहीं है तो आ भी सकता है. आ भी सकता है. अपना नेक्स्ट टेस्ट सीरीज किसके साथ? अभी अभी तो टाइम है, होम पे ही है. अभी बहुत टाइम है. आईपीएल ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है, आई थिंक. ऑस्ट्रेलिया के साथ है, आई थिंक एंड ऑफ द ईयर. अच्छा, तब तो दिस इज रियली गुड प्रैक्टिस फॉर देम पाकिस्तान में, बट इंडिया में तो उनसे ना हो पाए. बट अभी तो आईपीएल शुरू हो जाएगा 26 मार्च से. टेस्ट मैच हम भूल ही जाएंगे एंड आईपीएल ही चल रहा होगा सिर्फ. अच्छा, 6 सीरीज होते हैं ना, तो इंडिया का भी दिस इज थर्ड सीरीज, राइट? इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका से हुआ है, राइट? तो who else वो do तो we have to अभी play? परसेंटेज हो गया ना, अब तो आई थिंक वो मैटर नहीं करता. बट नहीं, बट अपने कौन सी सीरीज बचे हैं साइकिल में? हाँ, 6 सीरीज होते हैं. तो इंडिया का आई थिंक हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया. इंग्लैंड का भी एक टेस्ट मैच बाकी है जो होगा दुबई में. तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका हो गया एंड होम पे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया है एंड आई थिंक बाकी इंडिया बांग्लादेश जाने वाली है नेक्स्ट सीरीज एक्चुअली. सॉरी, उसके पहले बांग्लादेश जाने वाली है इंडिया 2 टेस्ट के लिए. वो अभी है, 1-2 महीने बाद ही है. मे बी आईपीएल के बाद होगी. आईपीएल के बाद. और हाँ, तो इंडिया और बांग्लादेश न्यूजीलैंड हो जाने गया ना. वाली. न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड आई थी इंडिया, तो वो भी हो गया. हाँ, एक और सीरीज. हाँ, 6 हो गई. हाँ, तो बस अब बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ बची है. हाँ, और दोनों सब कॉन्टिनेंट में ही है, मतलब बांग्लादेश में तो जाके वी कैन विन. तो यार ऑस्ट्रेलिया थोड़ा करे यार, मतलब दे फील लाइक दे आर मोटिवेटेड टू गेट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दिस टाइम. तो आई थिंक दे शुड ट्राई एंड ड्रॉ दिस टेस्ट मैच एंड मे बी नेक्स्ट टेस्ट मैच से दे विल बी मोर स्पाइसियर पिचेस. एंड वैसे अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सीरीज हारती है तो देन मेंटली इंडिया कैन देन डिफीट ऑस्ट्रेलिया, पूरा लाइक क्लीन स्वीप कर सकती है. और बांग्लादेश को भी इंडिया इज अ डिफरेंट टीम भाई. वो पाकिस्तान से को हराए जिताए, उससे उनको भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा. अगर इंडिया श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करती है तो वी कैन आल्सो मेक द फाइनल्स. देन आई एम श्योर बहुत बूस्ट हो जाएगा. हाँ, ऑब्वियसली. या Okay guys, so 1 minute left in the meeting and we'll be closing now. So let's see मतलब कि कैसे चलते हैं ये टेस्ट मैचेस. Hope Australia is able to draw and India will obviously win by tomorrow at max. Day after tomorrow morning शायद जीत जाएगा. And India Pakistan का मैच चल रहा है वुमेन्स का, तो I'll keep an eye on that because मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्या होगा इस वर्ल्ड कप में. And whether India will be able to challenge New Zealand and Australia are the favorites, obviously. So let's see, and we'll meet you maybe next week. So keep following our channel, and please subscribe our channel also. Thank you so much.